Question 1, scanner questions. So please have scanner, otherwise at least have hard copy of these questions. Question number 1, we are going to solve it in 400 pages book. So open your 400 pages book, and now before starting this chapter, write down heading of this chapter, process account, and please make index of 4 pages index, serial number, page number, remarks and category. Remarks and category. Serial number, page number, remarks is a bigger column and category is a last column. MJ Private Limited produces a product Sky which passes through 2 processes. So this is a final output, namely process A and process B, the details for which are given below. First question, I will solve it very slowly. 40,000 units were introduced at cost of 3,60,000. So cost will be debited. Material consumed, debit. Direct wages, debit. Manufacturing expense, debit. Output in units. Now beta, this output is credit. And normal wastage is 5% of total input. So 40,000 का 5% कितना हुआ बेटा? 40% का 40,000 का 5%. Yes. 2,000. So 2,000 units normal wastage. Next, scrap value is always for beta, you can write over here, is always for normal loss. Normal loss is always recorded at scrap value, and selling price is also given. Remember, selling price is, we record it in last one beta. Process A का selling price is given. So selling price we record it at 37 rupees per unit. So selling price जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए रिकॉर्ड होगा. So ये कॉस्टिंग पी एंड एल में जा, कॉस्टिंग पी एंड एल. सेलिंग प्राइस इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट इन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन. ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था क्या? यस, एनीवन? अद्विका? 80% of the process A output was passed to next process. So 80% of the output. So 37,000 into 80% ना होता है बेटा 37,000 29,600. So balance you left with 7,400. करेक्ट ना? करेक्ट क्या? 29,600 and 7,400 balance. So ये ट्रांसफर है and this is closing, sold. This is sold. You can write on question, this is sold. And the entire output of B is sold. So 27,000 पूरा का पूरा बेच दिया. Indirect expenses 4,48,080. So we are not going to apportion this. तो ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग पी एंड एल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे. It is assumed that process A and process B are not responsibility center. So ये responsibility मतलब ये प्रॉफिट नहीं कमा के देने वाले हैं. So responsibility centers नहीं है. Prepare process account A and process account B. Prepare P&L account for showing the net profit or loss for the year. Okay, so start. G. Write down. Process A account. Particulars. Units. Rupees. Particulars. Units. Rupees. अद्विका वन बाय वन बोलती जा बेटा, डोंट रेफर आंसर. चलो सबसे पहले
तो इनपुट भी लिख सकती है तू, और यू कैन राइट 2 units introduced to input. How many units? 40,000 units, 3,60,000 rupees. Then to material, rupees column 2,42,000. Don't write it in units column. To direct wages, 2,58,000. Next, to Manu expense, 1,96,000. By normal loss, लाइन बाय लाइन जाना बेटा. ओके ओके, सो पहले नॉर्मल लॉस लिख लेते हैं. सॉरी, बाय नॉर्मल लॉस, उसके बाद यस, हाउ मेनी यूनिट्स बेटा नॉर्मल लॉस? 40,000 का 5%, दिस इज 2,000. यू विल मल्टीप्लाई बाय स्क्रैप वैल्यू ना, तो 2,000 इंटू 15, हाउ मच बेटा? Why we have written normal loss first? Because we have to calculate cost per unit. That is only the, okay. By transfer to, so process B, bracket में transfer, how many units? 29,600. Okay, 29,600. Then नहीं, by closing stock, sorry, by sales है ना, by sales costing P&L. So this is red pen because this is not in study material. So by sales, how many units you sold beta? 7,400. I think this question is not in study material. लिख रखते हो नॉट इन स्टडी मटेरियल. सो सेल्स पहली बारी किया आपने 7,400. फर्स्ट बाय एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ही आ रहा है ना बेटा, क्या गेन आ रहा है? 40,000 यूनिट्स, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर. 40,000 minus 7,400, take on calci. 29,600 minus 2,000. Tell me the answer beta. 1,000. Now this is your A. सबसे पहले आपने A पे ये निकाला. Then you will calculate cost per unit is equal to, now every time I am not going to write this formula. Total cost minus scrap value divided by total units minus normal loss in unit. Total units minus normal loss in units. What is total cost beta? Tell me. 360. Take on calci only first 3 digits. Don't consider last 3 digits. 360 plus 242 plus 258 plus 196. Yes beta. 10,56,000 minus what you are going to deduct? Scrap value 30,000. How many units are there beta? 40,000 minus 2,000. Tell me the final calculation. This is 10,26,000, 38,000. रुपीज 27 per unit. Box कर दीजिए. Now you will multiply C. Take on calci. C
कैल्सी 27 इंटू फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाय, एक ही बार मल्टीप्लाई करना बिकॉज ऑल आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, इंटू 29,600 इज इक्वल टू कितना आया 7,99,200. Then just press 1000 is equal to that. I can answer easily 27,000. And by sales कितना, also at cost per unit 27 is equal to, sorry, 7,400 is equal to, बड़ा कैल्सी का शॉर्टकट यूज करना रे, क्यों इतना कर रही है कैल्सी का 1,99,800. तो योर टोटल इज नाउ, सी द टोटल, देखो मैच हो रही है क्या, 10,26,000 और क्रेडिट की भी मैच हो रही है क्या, चेक करो. सॉरी 10,56,000, 56 था ना, both sides, process A account over. Now do it for process B. चलो process B, particulars, units, rupees, particulars, units, rupees. Do process A account. How many units transferred? 29,600, 7,99,200. करेक्ट है. चलो यस अद्विका, आगे का कंटिन्यू करो. टू मटेरियल, $2,25,000. To wages you can find out, it's given 1,90,000. Manufacturing expense you can see here 1,23,720. Now tell me what is normal loss. 10% of input, correct है. So by normal loss 10% into 29,600, what is the value, 2,960, and always multiplied by which value beta, always multiplied by scrap value. And what is the scrap value, 20 rupees. 2,960 into 20, tell me, 59. Very good. Now by, yes beta, what is the output that received, 27,000 by sales na pura, 27,000. But I think now you are getting abnormal gain. Your credit side is more in units. So first close units column. So to abnormal gain, yes beta, what is the total, 29,960. So abnormal gain is 360. Correct है. And then you will multiply. So this is your number A. Then you will multiply B, cost per unit equal to total cost. तो चलो फॉर्मूला याद हो जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट. yes beta, what is total cost, take on calci, 799.2 plus 225 plus 190 plus 123.720, 13 lakh
13,37,920 માઇનસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી છે 59,200 total units 29,600 minus 2,960. Tell me the calculation. 13,37,920 minus 59,200 कितना आ रहा है 12 लाख ना आदमी का करना यार फटाफट 78 डिनोमिनेटर में 12,78,720 और डिनोमिनेटर में 29,600 minus 2,960 26,640 total answer 48 per unit. Now you will multiply this B नहीं C. अद्विका क्या चल रहा है तेरे घर में आवाज कौन से आ रहे हैं सेजल प्लीज म्यूट कर दो निकिता म्यूट कर दे बेटा यस नाउ मल्टीप्लाई 27,000 into 48 फटाफट करो 27,000 into 48 12,96,000 360 का तो ये कौन बोलेगा 17,280 टेक अ टोटल फटाफट 13,37,920 ऑलरेडी टोटल लिया है सो डू स्मार्ट वर्क प्लस 17,280 कितना आया 13,37,920 डेबिट करो ना 13,55,200 दोनों साइड पे आ रहा है क्या देखो करेक्ट है व्हाट इज आस्क P&L अकाउंट इज आस्क ना लास्ट पार्ट क्या पूछा है P&L अकाउंट चलो राइट डाउन P&L अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस अच्छा इधर आपने 2 सेल्स लिखा है ना जहां पे बाय सेल्स लिखा है ना आपने बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो वहां पे क्या लिखोगे बाय cost of sales because we have not recorded it at selling price we have recorded at cost of sales cost पे yes understood advika understood to cost of sales beta process A process B what is the cost of sales beta 199,800 and 12 lakh 96,000 करेक्ट है बाय सेल्स प्रोसेस ए हाउ मेनी यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड बेटा सोल्ड यस हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड 7,400 एट प्राइस ऑफ और ये कितना बेचा 27,000 ओके 7,400 वी सोल्ड इट एट रुपीज यस कितना सेलिंग प्राइस दिया है 37 given in the question and process B 27,000 into 61 था ना बेटा 61 it's the selling price can you tell me the multiplication 2,73,800 16,47,000 see then here you will write debit में loss लिखेंगे to abnormal loss process A but wait how to write abnormal loss how to write this it is cost per unit minus scrap value cost per unit minus scrap value so what is cost per unit 27 what is scrap value per unit 15 na yes 27 minus 15 into how many units beta abnormal loss के units कितने हैं
1000. So to 1000. So this is a shortcut of abnormal loss without writing. I will show you the accounting at the end. So 1000 into कितना आया ये 12 rupees 12,000, and by abnormal gain which process B, what is the cost per unit beta? What is the cost per unit? 48. What is the scrap value? B's na? How many units? 48 minus B's. So how many units? 360 units. Abnormal gain is 360 units. So 360 into 28 कीजिए, कितना आया बेटा? 10,080. And 2 indirect expenses is given na separately. 2 indirect expenses 4,48,080. कॉमन में आएगा ना वो 4,48,080. It is in P&L account. See the balancing figure. Yes beta, take a total. Debit side is more. मुझे याद है. Can you tell me the total beta, debit side? 19,55,880. Please you do your calculations. थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, but do your calculation by your own. Use calci. स्पीड बढ़ता है. Please do not copy paste. 55,000. 17 minutes. 44 seconds. एक्चुअली मेरा स्पीड बहुत बढ़ सकता था, बट फर्स्ट क्वेश्चन सो मैंने थोड़ा सा स्लो लिया. आप लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद से ये. टेक्स्ट में आ जाओ. टेक्स्ट क्वेश्चन 1. इधर सिर्फ लिखना टाइप 1 के नीचे लिखना टाइप 1, मतलब नो WIP. टाइप 1 2 3 ऐसा हम लोग लिखेंगे. सो इफ WIP होगा तो टाइप 2 एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा तो टाइप 3. तो आप ये इंडेक्स में ही ऊपर लिख के रखना. टाइप 1 मीन्स नो WIP क्वेश्चन. टाइप 2 WIP, that is equivalent units. टाइप 3 इंडेक्स में ऊपर लिखना. टाइप 3 is inter process profit. इसमें लिखना प्रोसेस अकाउंट. तो प्रोसेस अकाउंट में कंसिस्ट ऑफ transfer to next process and units sold. इसको लिख के रखना. नॉट इन स्टडी मटेरियल रेड पेन से. यूनिट सोल्ड का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं था. सेकंड डैश. अच्छा, वेदर यू वांट टू प्रिपेयर. हाँ यस, यहाँ पे एक ध्यान में रखना. P&L अकाउंट का प्रोफॉर्मा. टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एट कॉस्ट, कॉमन सेंस. Sales at selling price. Then here to abnormal loss. तो abnormal loss कैसे निकालेंगे हम लोग? Cost per unit minus scrap value into abnormal units. So
Similarly here, by abnormal gain, how to calculate beta? Cost per unit minus scrap value into abnormal units. To abnormal units. Do direct expenses common ये रेड पेन से common, not process wise, then by net loss. By net loss. Advika, whether you want to prepare abnormal loss account, abnormal gain account, and normal loss account or no, is not asked actually. Okay, come to 100 pages notebook. Come to 100 pages notebook. That you can write pro forma of normal loss account, particulars, units, rupees, particulars, units, rupees. Yes, but Advika, what is the pro forma? आएगा क्या नहीं आएगा? कॉमन सेंस लगा बेटा अद्विका थोड़ा सा, जो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते जाओ. नॉर्मल लॉस यूनिट्स लिखोगे और स्क्रैप वैल्यू पे लिखोगे. इधर प्रोसेस के क्रेडिट में लिखा है तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में क्या आएगा? प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स एंड रुपीज में कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू. और पैसा भी कितना मिलेगा? बाय बैंक यूनिट्स एंड स्क्रैप वैल्यू. तो ये आपका टैली होने वाला है. तो नॉर्मल लॉस में कभी भी नो बैलेंसिंग फिगर. अब भी किया हमने. नॉर्मल लॉस का प्रोफॉर्मा नहीं आता कैसे बोल सकता है कोई? यही चीजें जो हमें फेल्यूर के टूवर्ड्स लेके जाती है कि अलर्ट नहीं रहना, सिर्फ मैकेनिकली करते रहना. हम लोगों को कोई सिखाता नहीं था इतना कि भाई ये है ऐसा रहता है. अभी इधर 100 पेजेस बुक बना के दो, समरी बुक बना के दो, फॉर्मूले बुक बना के दो, स्कैनर के क्वेश्चंस करवाओ, एवरीथिंग स्पून फीडिंग. इतना करने के बावजूद हम लोग हमारा दिमाग ही यूज नहीं करते. डिटेल में करवाता हूं तो भी नहीं समझ में आता है. अभी ये तो बेसिक था, ये आंखों के सामने आना चाहिए. पता एबनॉर्मल लॉस का प्रोफॉर्मा. थोड़ा सा आंसर नहीं देखने का. टू प्रोसेस अकाउंट कौन से वैल्यू से दिखता? कॉस्ट पर यूनिट. एंड बाय बैंक कौन सी वैल्यू? फिर आप स्क्रैप ही मिलेगा ना स्क्रैप वैल्यू पे. एंड देयरफॉर जो कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस है वो किधर डालेगी? पी एंड एल डिफरेंस. नहीं समझ में आता क्या? इसीलिए तो हमने पी एंड एल के डेबिट में लिखा ना टू एबनॉर्मल लॉस विदाउट ओपनिंग अकाउंट. तो ध्यान में नहीं आता अकाउंट्स आपको इसके डेबिट में तो उसके क्रेडिट में. तो पी एंड एल के डेबिट में लिखा ना आपने टू एबनॉर्मल लॉस. लिखा क्या नहीं लिखा? और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बता अभी. बाय प्रोसेस अकाउंट. वेरी गुड. कॉस्ट पर यूनिट टू बैंक पी एंड एल और कॉस्टिंग पी एंड एल भी बोल सकते हो. डिफरेंस.
हो गया क्या? ये आया था क्या पी एंड एल के क्रेडिट साइड में बाय एबनॉर्मल गेन डिफरेंस से किया ना तूने एंट्री, यही लिख दो अभी। पी एंड एल अकाउंट भी लिख दो, टेक्स्ट में भी लिखा है, इधर भी लिख दो। कि उन्होंने जो आंसर्स दिए स्कैनर में वो थोड़े घटिया है, वो एबनॉर्मल गेन उन्होंने यूनिट्स में ट्रांसफर किए और बाद में पी एंड एल लिया, तो वैसा अलाउड नहीं है। और बाद में वापस बाय बैंक पकड़ा, तो उनका प्रोफॉर्मा बहुत घटिया है। डोंट यूज दैट प्रोफॉर्मा। क्या? तो स्कैनर का प्रोफॉर्मा मत करना, ये प्रोफॉर्मा करना। ये सद्विका जी कुछ समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस इज नॉट आस्क इन द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? हो गया लिख के प्रोफॉर्मा। कैटेगरी आप ही बता दो। बी का को अभी पहली बार ही है ना, स्टडी मटेरियल में है क्या क्वेश्चन? तो सेल्स ही इंपॉर्टेंट है ना इसमें। ए कैटेगरी रख दो, ए कैटेगरी। लोग जी इजी। लोग जी व्हाट इज न्यू फॉर यू? नया क्या था? यस क्विकली रिवाइज, नया क्या था आपके लिए? चलो फटाफट बताओ। यस अनुषा, व्हाट इज न्यू फॉर यू? तभी नया था? अरे बाप रे। सो जल्दी जल्दी क्विकली रिवीजन करते। व्हाट इज द प्रोफॉर्मा ऑफ एबनॉर्मल लॉस? सेल्स इज न्यू फॉर यू, ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से क्विकली रिवीजन एक बार मैं वापस बताता हूँ कि आप लोग दो तीन बार आज क्विक रिवीजन में क्या करना। सो आप लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा फटाफट फटाफट खुद से। नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट में टू प्रोसेस अकाउंट आएगा एंड क्रेडिट में बाय बैंक आएगा, ये टल्ली होगा क्योंकि दोनों भी स्क्रैप वैल्यू से रिकॉर्ड होता है। फिर दूसरा एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में टू प्रोसेस अकाउंट। टू प्रोसेस अकाउंट होता है कॉस्ट पर यूनिट से, और यहाँ पे बाय बैंक आएगा स्क्रैप वैल्यू से, तो बाय पी एंड एल अकाउंट आएगा डिफरेंस से, बाय पी एंड एल और ये बाय बैंक आएगा स्क्रैप वैल्यू। सो ये आपका प्रोफॉर्मा फटाफट याद करने का, एक दो बार मैं बोलवा के लेता हूँ आपसे तो अपने आप याद हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन जो है वो यहाँ पे बाय प्रोसेस अकाउंट आता है, उल्टा आता है ये। बाय प्रोसेस अकाउंट एट विच प्राइस कॉस्ट पर यूनिट एंड टू बैंक, ये आपका आएगा स्क्रैप वैल्यू से, तो टू कॉस्टिंग पी एंड एल में या टू पी एंड एल में जाएगा डिफरेंस। सो ये था एबनॉर्मल गेन। और उसके बाद आपका पी एंड एल अकाउंट, तो पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है? तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे बाय सेल्स, यहाँ पे बाय कॉस्टिंग पी एंड एल एबनॉर्मल गेन, और यहाँ पे टू एबनॉर्मल लॉस एंड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर कॉमन एंड बाय नेट लॉस। चलो जल्दी से अद्वी का एक बार क्विक रिवीजन बता। फर्स्ट वन, यस बेटा जल्दी से बता। नॉर्मल लॉस बिना देखे बता, बिना देखे फटाफट फटाफट। टू प्रोसेस अकाउंट एट स्क्रैप वैल्यू, बाय बैंक स्क्रैप वैल्यू, डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा डिफरेंस। चलो नेक्स्ट वन, एबनॉर्मल लॉस। टू प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट पर यूनिट, बाय बैंक स्क्रैप वैल्यू एंड बाय डिफरन्स इन पी एंड एल, बाय पी एंड एल और पी एंड एलच्या डेबिटला। हां, देन एबनॉर्मल गेन बाय प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट पर यूनिट से, हाँ, टू टू बैंक एट स्क्रैप वैल्यू, हाँ, टू पी एंड एल डिफरेंस, वेरी गुड। एंड देन पी एंड एल अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू, ओके। नॉर्मल लॉस पी एंड एल में आएगा क्या? नॉर्मल लॉस पी एंड एल में आएगा? नॉर्मल लॉस पी एंड एल में नहीं आएगा। पी एंड एल के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल बाय सेल्स, बाय एबनॉर्मल गेन टू एबनॉर्मल लॉस एंड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कॉमन वाले, एंड बाय नेट लॉस, वेरी गुड।
वेरी गुड। सो इट्स वेरी सिंपल, होप यू एंजॉयड। अभी तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके अभी क्लियर हो चुके हैं। नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट, वेरी गुड, इसलिए वो नहीं आता है, तो पी एंड एल में नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस इज नेवर इन पी एंड एल बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। अब्दुल भाई ने कमेंट भी दे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस जो है वो ओवर हो चुके हैं। सो ये एक ही क्वेश्चन था जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें अभी वैरायटी क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइम लगा के सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हमें बहुत टाइम लगा के प्रॉपरली सॉल्व करना है।